In today's video, we are taking you to the Rothenburg, which is a small, cute little village. Look at this view. There is a castle in the back and the natural beauty with the old bridge, and it's surrounded by the whole village. तो गाइस ड्रिजलिंग स्टार्ट हो चुकी है, वेदर बहुत अच्छा है और हम बारिश को एंजॉय करें। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ट्रैवलशीश, जहां मैं सदा आप लेकर चलते हैं आपको डिफरेंट प्लेसेस पर। आज हम निकले हैं रॉटनबर्ग की तरफ। रात में हम थे फ्रैंकफर्ट से, आज हम कार में निकले हैं, वहां पहुंचते हैं और आपको दिखाते हैं कि रॉटनबर्ग कैसा है। Let's go. हमारी आज की वीडियो में हम आपको लेकर जा रहे हैं रॉटनबर्ग में, विच इज़ अ मिडीवल टाउन फ्रॉम 12th सेंचुरी। और ये जो है फ्रैंकफर्ट से तकरीबन 2 आवर्स अवे है, ड्राइव अवे, तो आप वहाँ से ड्राइव करके यहाँ पर आ सकते हैं। एंड दिस इज़ वन ऑफ द टाउन विच हैवेंट बॉम्ब ब्लास्टेड इन द वर्ल्ड वॉर 2, और ये जो है सेफ़ हो गया था, और क्यों ना हो। इट इज़ अ वेरी लिटिल क्यूट लिटिल टाउन। हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर, वेदर भी अच्छा है, इट्स वेरी कलरफुल। तो चलें इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो अभी हम हैं इसके टाउन स्क्वायर पे। इट्स अ स्मॉल लिटिल ओल्ड टाउन, बट ये है कि अभी टूरिस्ट नहीं हैं, हम अर्ली मॉर्निंग में हैं। बट ये कि जैसे दिन गुजरता जा रहा है हमें नज़र आई हैं कुछ बसेस वगैरह, सो आई थिंक टूरिस्ट बढ़ जाएंगे। तो लेट्स एक्सप्लोर इन द मॉर्निंग, जब तक के रश नहीं होता। So guys, now you can see the beautiful village behind me. Look at those colorful houses. टाउन में क्यूट हाउसेस होने के साथ साथ यहाँ के souvenir शॉप्स भी बहुत क्यूट्स हैं। हर जगह पर कुछ ना कुछ जो है क्यूट चीज़ रखी हुई है, और इट गिव्स वेरी ब्यूटीफुल वाइब टू द विजिटर्स। So guys, now we are in the cute souvenir shop and buying some souvenirs. ये शॉप बड़ी क्यूट है, सो रॉटनबर्ग का भी souvenir ले लेते हैं, बिकॉज हमारे पास तकरीबन जहाँ हम गए हैं हर जगह से हमने कोई ना कोई souvenir जो लिया है और अपने फ्रिज पे लगाया हुआ है। सो इट रिमाइंड्स अस ऑफ द ट्रैवल जर्नी ऑफ अस। Over there you can see this is the clock tower. I think every hour the bell over there would be ringing, और सारा टाउन जो है वो उसकी बेल से जो है बेल की आवाज़ से गूंजता होगा।
Look at this view. There is a castle in the back and the natural beauty with the old bridge, and it's surrounded by the whole village. See, it's so heavenly. सो गाइस हियर यू कैन सी ऑन माय बैक साइड दिस इज़ द फेमस हाउस। आप जब भी रॉटनबर्ग की जो है सर्च करेंगे यूट्यूब पे या कहीं भी तो दिस हाउस विल अपीयर। सो दिस द फेमस स्पॉट। यहाँ पर आकर लोग ज़रूर अपनी पिक्चर खिंचवाते हैं, तो हम भी इसको कवर करते हैं। क्यों फान? सो फान व्हाट यू डूइंग हियर? Bag it? Hey, you look just like him. Come. रॉटनबर्ग रिमाइंड्स मी ऑफ हॉल स्टेट में भी इसी तरह से घर थे, साइड में फ्लावर्स थे और फ्रेश फ्लावर्स थे, बट ये कि वो वहाँ पर लेक भी थी। सो इट लुक्स रियली वेरी ब्यूटीफुल। बट ये कि यहाँ के हाउसेस बिल्कुल हॉल स्टेट की तरह ही हैं। सो गाइस ऑन माय बैक साइड दिस इज़ द क्रिमिनल म्यूज़ियम। इसमें जो है अंदर जाकर देखते हैं कि किस तरह का है, बट अंदर वीडियोग्राफी इज़ नॉट अलाउड। तो हम जाकर देखते हैं कि अंदर क्या कुछ है। आई थिंक देयर मस्ट बी क्रिमिनल्स एंड देयर मस्ट बी पनिशमेंट्स, प्रिजनर्स एंड ऑल। चले जाके देखते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह का है। What have you done? You have sentenced. Look here, say something. What have you done? I've done nothing. There's a criminal behind me. Come get out of here. So guys, this museum is for €9 for the adult and €6 for the children. But ये है कि अंदर जाके थोड़ा सा depressing experience होता है, because you can see the crimes and the punishments and all. Yeah, and I wanted to see that. So it's better अगर आपका दिल बड़ा है तो आप अंदर जाइए, अदरवाइज़ ये है कि आप बाहर से भी होकर आ सकते हैं। सो गाइस दिस इज़ द क्वाइंट लिटिल टाउन। और आज विंडी बहुत है, मौसम अच्छा हो रहा है और नीचे आप देखें यहाँ पे ऑटम लीव्स जो है अब नज़र आना शुरू हो गए। थोड़े अरसे में जो है ऑटम स्टार्ट हो जाएगा एंड आई थिंक यहाँ तो बारिश भी शुरू होने वाली है। And it will look so beautiful. Yes, it is. So guys, now we are going towards the city fortification walls. पुराने ज़माने में इस तरह से वॉल्स जो बनाई होती थी एंड यहाँ से आप देख सकते थे बाहर के चल रहे हैं। वक्तों में सारे विलेजेस और सिटीज़ के अराउंड जो है वॉल्स क्रिएट होती थी और दे आर कंक्रीट वॉल्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द एनिमीज, फ्रॉम एवरीबडी। और ये कि गेट्स होते थे, जहाँ स्टार्ट में हमने आपको दिखाया था, इट इज़ द गेट जहाँ से लोग सिटी में एंटर होते थे। अब चूँकि ये टूरिस्ट विलेज बन गया है तो वो गेट वगैरह सब ख़त्म हो गया है एंड एवरीबडी कैन पास थ्रू इट। Guys, here you can see these are the boards. यहाँ पर जो है उन लोगों के नाम लिखे हुए हैं जिन जिन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है इस फोर्टिफिकेशन वॉल में। यहाँ एंड तक जो है सारे बोर्ड्स लगे हुए हैं, उन पे नाम भी लिखा हुआ है और उनकी कंट्री लिखी हुई है।
So guys, here on my back side you can see ये सारे बच्चे I guess स्कूल के हैं and they are waving at me. Hi. It's a cold, hard world outside my window, where people don't know which way to go. This town really is a peaceful place. तो अगर आप सुकून चाहते हैं and you enjoy the peaceful places, you should definitely visit here. Rothenburg is totally recommended. I stay home with you inside my head. We go undercover, I will be your lover. We're up through night and day. Come on, let me hear you say, let's go undercover. I wanna be your lover. I don't want the games they play. It's not us, so we better stay. Is it real? Could this be a new beginning? My whole world falls apart with just the thought of you. तो गाइस ड्रिजलिंग स्टार्ट हो चुकी है, वेदर बहुत अच्छा है और हम बारिश को एंजॉय कर रहे हैं. I will be your lover. We're up tonight and day. Come on, let me hear you say, let's go undercover. I wanna be your lover. I don't want the games they play. It's not us, so we better stay undercover. एंड द रेन हैज जस्ट स्टार्टेड. बारिश शुरू हो चुकी है, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है एंड वी आर एंजॉयिंग द रेन. Yay, rain, rain, go away, come again another day. Afan Ahmed wants to play. Rain, rain, go away. तो गाइस अभी हम आकर बैठे हैं ताज महल रेस्टोरेंट में और हमने जो है लंच के लिए ऑर्डर किया है दाल चावल और बटर मसाला. तो अभी आता है तो आपको दिखाते हैं. लेट्स वेट फॉर द लंच. हमें लग रही है अच्छी खासी भूख क्योंकि हमने पूरी सिटी घूम ली है. सो अब करते हैं खाना. जैसे ही खाना आता है मैं आपको दिखाती हूँ. तो जनाब हमारा खाना आ चुका है. ये हमने ऑर्डर किया है. दिस इज पनीर बटर मसाला एंड दिस इज दाल तड़का और ये है हमारे राइस. तो स्टार्ट करते हैं हमारा खाना. अब खाना आप क्या लोगे? मैं लूँगा पनीर. पनीर रात है दाल चावल. लेट्स स्टार्ट अवर फूड. Let's start. Wow, let's enjoy the rain. तो गाइस खाना हमारा हो गया है. हमने मंगवाया था बटर मसाला, दाल तड़का, चावल और नान और अफा ने ली थी साथ में मैंगो लस्सी. हमारे बने हैं तकरीबन 23 यूरोस. सो खाना अच्छा था एंड इट्स रीजनेबल एज वेल. तो इसके साथ ही करते हैं अपने रॉटनबर्ग की वीडियो यहीं पर एंड. उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और आपने इस छोटे से टाउन को बहुत इंजॉय किया होगा हमारी तरह. तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा. If you like our videos, please like, share, comment and subscribe to Travelsheesh for more videos. If you have a question, please post it in the comments and we'll see you in our next video. And you can also follow us on Instagram, Facebook, Twitter and TikTok. Our handles are Travelsheesh. Bye. See you in the next video. Bye.